Hello everyone, this is the up-solving session of the Codeforces round 895, which is a Dev 3 contest. We have solved the first five problems and we will be discussing the same and we will seeing the solutions of all five of them. If you are new to the channel, subscribe to the channel and there's a 30-day series going on of Codeforces challenge, so do check it out as well. Without any further ado, let's start the explanation of the up-solving session. The very first problem is a two vessels problem. So it is a very simple problem. I won't be wasting much time in explaining the problem. You can just pause the video and read it. Sorry, I won't be giving time to read the problem. I will be directly explaining the problem. So basically, it is given that there are three vessels A, B, and C. Now, what you need to do is A, B, and C. A and B are of infinite. A and B, these vessels currently have A ml water and B ml water, or I guess they are given in liter. That doesn't matter. But their capacity is infinity. Meanwhile, there is a empty vessel C in which you can pour some amount of water. Basically, आपको what you have been said कि आपको A and B ये जो vessels हैं इसमें infinity amount of water आप रख सकते हो. अभी currently एक vessel में A amount of water है और दूसरे vessel में B amount of water है. आपको क्या करना है कि you have to pour some amount of water from B to A और A to B जिसमें भी ज्यादा है, मतलब suppose A में 10 है and B में 5 है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को सेम करना है मतलब 7.5 7.5 करना है. सो आपको इसमें से ढाई रिड्यूस करना है. यू हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर बाय 2.5. So to reduce the amount of water by 2.5, what you can do is first pour the water into a vessel जिसकी capacity C है. C, suppose the capacity C is 3. So if the capacity C is 3, what you can do is simply pour 2.5 of water, 2.5 water from this one. So इसकी capacity 7.5 हो जाएगी and add 2.5 to this one. इसकी capacity 7.5 हो जाएगी. Basically you have to first put an s some amount of water in C and then उस amount को वापस B में डाल देना है so that उसकी value increase हो जाए. So A से हटा के आपको basically B में डालना है, but at a time you cannot do more than 3. Suppose C की value 1 होती and अभी initially 10 है and B में 5 है. So what you need to do is first time you can do at the max of 1. So if you will do a max of 1, the value of A will be 9 and the value of B will be 6. Are they same? No. Again reduce it by 1 and increase it by 1. Are they same? No. Again reduce it by 1 and increase, or okay. Now the difference is less than 1. It's not even 1. It's not 1. So you can say I just need to reduce it by 0.5. So you will reduce it by 0.5 and you will increase it by 0.5. So now are they same? Yes. So basically आप क्या what you can do is you can increase or you can decrease the water up to the value C. It can be in decimal or as well. And by doing this you need to make those water equal. So it is a very straightforward question. What we will simply do is we will check. Initially, we will see it is 10 and it is 5. So what is the difference? Difference between A and B. A is 10 and B is 5. So the absolute difference between A and B is 5. Since we need to equal them, so we need to divide the difference by 5 by 2, which is 2.5. So we need 2.5 turns. We need to move 2.5 amount of water. In one times, you can move one amount of water. So how many times, how many turns you need? 2.5 by 1, that is 2.5. The seal value will be 3. So we need 3 turns. Similarly, if the value of C would be 2, then we need 2.5 by 2. So what will be the value? It will be seal 1.25. The seal value will be 2. And so on. If the value would be 3, then we will be requiring 2.5 by 3, which will give us a seal value of 1. तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है दैट कितना अमाउंट ऑफ वाटर आप पास कर सकते हो एक बार में. तो जस्ट चेक करना है कि आपको कितना अमाउंट ऑफ वाटर पास करना है. फॉर एग्जांपल ये वाला देख लेते हैं 17 4 और 3. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स ना करते हुए 17 4 और 3. सो 17 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 13. तो हम लोग को 13 अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है एक में. तो अगर मुझे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो अमाउंट ऑफ वाटर, तो 6.5. अगर मुझे 6.5 अमाउंट ऑफ वाटर मुझे एक उससे दूसरे में भेजना है और एक बार में मैं 3 भेज सकता हूँ, तो हाउ आई विल कैलकुलेट कितने टर्न्स लगेंगे. सिंपली कैलकुलेट द डिवीजन ऑफ देम यूजिंग सील.
So you will get the answer as 3. So let's take whether the answer is 3 or not. Yes. So this was a pretty straightforward question. So I will show you the code as well. So uh, you can see the code is very simple. We have first checked the absolute difference between them, and when we have just divided that difference by 2 and then by c, and we have printed the value. So yeah, straightforward question. Hope सबको समझ में आ गया होगा. If not, then you can put in the comment box if something you have a doubt in somewhere. I will try to answer in the comment box, or I will answer it in the next video. We will move to our second question now. Okay, so the second problem is the corridor or there and back again. Simply problem बहुत simple है again. एक rooms है, एक पूरा road है इसमें and rooms है. ये infinitely long road है and बीच बीच में traps रखे. And what your traps, जैसे आप उन trap पे step रख दोगे, after few seconds वो trap activate हो जाएंगे. After how many seconds वो वहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ कि ट्रैक की पोजीशन ये है ट्रैप की एंड इतने सेकंड बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा वंस यू स्टेप ऑन टू दैट ट्रैप. So what you need to do is basically you need to calculate कि आप maximum कितनी दूर जा सकते हो. For example, suppose you are here, you step one at you are currently at first position. Now you are moving to second position. You move to third position. अगर ये जो trap है ये 5 सेकंड बाद एक्टिवेट होने वाला है. So you can move to the fourth position. 1 सेकंड हो गए. You can move to the fifth position. 2 सेकंड हो गए. If you will now move to the sixth position, 3 सेकंड हो गए. So when you will be returning, so fourth सेकंड में आप यहाँ रहोगे, फिफ्थ सेकंड में यहाँ रहोगे और यहाँ ट्रैप रहेगा. You cannot move to it. So you cannot go to the sixth position. Now see again. We are at the first position. You move to the second position. You move to the third position. Trap is activated. Now you move to the fourth position. 1 second is gone. You move to the fifth position. 2 seconds are gone. You return back to the fourth position. 3 seconds are gone. You return back to the third position. 4 seconds are gone. You return back to the fifth position. The trap is activated, but now you have crossed it because now you are to the left side of it. So you can safely go to the starting point. Hope समझ में आया हो मैं क्या बोल रहा हूँ. After few seconds, the trap will be activated. So you need to make sure you return before the trap. Like you return to the previous place of the trap before the traps get activated. अब ये तो बहुत simple है यार. If that activation time of the trap is 5 seconds, let's take an example. Let's take an example. Okay, we will take a simple, very simple example. Okay, suppose here is a trap which will be activated after 5 seconds, right? So what will happen is you are starting from here, you move to here, you move to here, trap is activated. Now, when you moved here, 1 second has passed. Now you moved here, 2 seconds are passed. Now you moved here, 3 seconds are passed. Now we will simply try to return. Let's just try to return. So we have already discussed the fourth second will pass here and the fifth second will pass here. So you won't be, and the trap will be activated. And once the trap is activated, you won't be able to pass the trap. You won't be able to return to the starting point. So you cannot move to 3 steps. So just try to move to 2 steps. So what will happen? You will come here at third. You will come back to this particular place in third second and this particular place at fourth second and before track at fifth second. So you have reached before track in the second when the trap was activated. So you can say you have safely reached before the trap and now you can safely go home. So very simple solution is for this is there are various traps. So for each trap we will calculate कि हम आगे कितने steps जा सकते हैं. If the value is 5, so you can see we can go to 2 steps. Let's try to see the value for 4. Suppose 4 है. So you come here 1 second, you come here 2 seconds, you come here 3 seconds. Now you are coming here at fourth second. Now the fourth second you are here. So you have sorry the third second you reached at this point. At the fourth second, you reached to this point, but at the fourth second, the trap got activated and you got caught in the trap. So for value 4,
you can just move to one position. So with this conclusion, you can just try it by your own, try to try, and you will understand. You can move to a position. Suppose the value is anything. So we will take if it is even. So you can move to b minus 1. If it is even, then it's b by 2 minus 1. If it is odd, then it is simply b by 2. Just try to find out this, and if you will carefully observe it, you can write it as for both of the cases, you can simply write it like this: b minus 1 by 2. So what is this? You can cover this many steps before the traps get activated. So you need to calculate this particular value for each step, and you will get the maximum place where you can move forward. Let's directly look at the solution. आई होप समझ में आया होगा मैं क्या बता रहा हूँ. हर ट्रैप के लिए हमें यही चेक करना है कि यार मैं इससे कितना आगे जा सकता हूँ. और जो ट्रैप बोलेगा कि यार मेरे से तू मिनिमम इतना आगे जा सकता है, मान लो ये ट्रैप अभी थर्ड पोजीशन पे है, तो उस पोजीशन को ए बोल देते, तो हर ट्रैप पे हम जाके क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस 1/2 की मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे कि हम लोग में से कौन सा ट्रैप हमें मिनिमम दूर जाने दे रहा है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा. सपोज कोई ट्रैप नहीं है, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी. तो इनिशियली आंसर को इन्फिनिटी सेट कर दो. फर्स्ट ट्रैप मिला, उसको पूछो भाई तू मुझे कहाँ तक जाने देगा. अच्छा तू मुझे यहाँ तक जाने दे रहा है, ठीक है. फिर अगला कोई ट्रैप मिलेगा, उसको पूछो तू मुझे कहाँ तक जाने दे रहा है. अच्छा तू मुझे यहाँ तक जाने दे रहा है, तो उस पे फिर आंसर डिसाइड करेंगे. मतलब मान लेते हैं ये 50 होता, तो ये तो मुझे बहुत आगे तक जाने दे रहा है, बट सिंस ये वैल्यू क्या है, 2 है, तो अगर मैं इससे एक स्टेप भी आगे गया तो क्या होगा, मैं सेकेंड स्टेप में वापस यहाँ आऊंगा और मैं ट्रैप में फंस जाऊंगा. सो मैं इसके आगे नहीं जा सकता. सो इट विल गिव मी द मिनिमम वैल्यू. सो हर स्टेप के लिए वैसे ही चेक करना और हम लोग को मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ड्राई रन करके देखो, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. वी विल फर्स्ट लुक एट द सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन इज अगेन वेरी सिंपल. अच्छा, ऑल द सॉल्यूशन लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. तो ये मत पूछना कि यार सॉल्यूशन पे ज्यादा देर रुके नहीं, या फॉन्ट छोटा था या कुछ. सिंपली गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट द सॉल्यूशन ओवर देयर. हमने इनिशियली इंट मैक्स लिया विच इज ट्रीटेड एज इंफिनिटी. देन हमने हर जो भी ट्रैप है उसकी पोजीशन ली और वहां पे जाके यही वैल्यू कैलकुलेट की, ए प्लस बी माइनस 1/2. बी माइनस 1/2 क्या है कि वो कितना आगे अलाउ कर रहा है, और ए क्या है उसकी करंट पोजीशन. तो एट हर पर्टिकुलर एट ईच स्टेप वी जस्ट कैलकुलेटेड द मिनिमम ऑफ 10 and we got our answer. So yeah, it was very simple. It was again a very simple problem. It's a Div 3 contest, so you expect very simple problems at least up to B or C. So let's see the next problem, which is the C1. I have to see what it is. Non-coprime split. Again, a very easy problem. A plus B, LR, and GCD. Okay, I will explain the problem. I hope you have read the problem. There are three values given. There are two values given actually, L and R, I guess. Yeah, what you need to do is you need to find a value, maybe G. Sorry, okay, L and R. So you need to find two values whose sum lies between L and R. Whose sum lies between L and R, and whose GCD, जिसका GCD 1 नहीं आता. तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है यार. सी अगर तो एल और आर के बीच में कोई ना कोई तो इवन नंबर आएगा. लेट टेक एनी एग्जांपल. मे बी एल इज 100, आर इज 500. तो इसके बीच में कोई भी एक इवन नंबर ले लो. मे बी लेट्स टेक आर ओनली. सो अगर हम लोग आर ले लेंगे, इन दोनों कंडीशन को हमें याद रखना है. सो वी विल जस्ट पुट दोस कंडीशन इनटू अनदर टेक्स्ट बॉक्स, और उसको हम ऐसे याद रखेंगे कि हाँ ये कंडीशंस हमें फॉलो करनी है. सो लेट्स जस्ट पुट दोस कंडीशंस आउट हियर कि हाँ हमें ये दो कंडीशंस को फॉलो करनी है. जस्ट याद रखना. ओके, सो सपोज what you can simply do is just check what and to find any even number there. R is an even number. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि r/2 r/2 will give me the sum as r, and r/2 r/2 का जो GCD है वो भी r/2 आएगा, which won't be equal to 1 because r 500 है. So if एक बहुत सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाता है, find any number even number between them and put r/2. Suppose ये 500 ना होके 507 होता, तो r इज नॉट एन इवन नंबर. तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ r वी विल टेक इट एज r-1. मतलब हम लोग ट्राई करेंगे 506 को बनाने का.
506 by 2, which will be uh okay. What I'm trying to convey is instead of r we will take r minus 1. That's it. R minus 1. बिकॉज हमें सिर्फ एक इवन नंबर चाहिए, तो आर इवन नंबर नहीं था तो आर माइनस वन तो एक इवन नंबर होगा, तो हम आर माइनस वन को ले लेंगे और उस पर हम लोग वो कर लेंगे, क्योंकि अगर कोई भी इवन नंबर मिल गया तो क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया ना, क्योंकि इवन नंबर बाय टू ऑलवेज गिव द इवन नंबर एंड उनका सिंस बोथ नंबर आर सेम तो उनका जीसीडी भी उसके इक्वल आएगा, तो जीसीडी won't be equal to 1 and their sum will lie between L and R. So this was very simple. Now there are few cases. Suppose L and R both are equal and both are odd. L and R both are equal and both are odd. Let's just take this particular example. If both are even, then what we will do? If both are even, simply again, R is even, as I said, if R is even, just take by 2 by 2. But अगर L और R दोनों even और दोनों odd हो जाए, let's take 15 and let's take 15. अगर दोनों even और दोनों सॉरी दोनों odd है और दोनों ये हो जाए, तब हम क्या करेंगे? We will try to find the divisor of it. 15 का divisor क्या होता है? 3. So we will take 3 and 12. Now think of it. 3 and 12 will give us the sum as 15, which lies between them, and 3 and 12 will always have a GCD equal to 3 because हमने divisor लिया है, तो अगर कोई divisor है तो उसका दूसरा divisor भी आएगा. Are you able to understand? हमने एक छोटा multiple लिया तो एक दूसरा multiple भी आएगा. Or what in case of prime number? Let's see. L equal to 17, R equal to 17. It is a prime number. So what we will do? We will take as 1 comma 16. So what is the GCD of them? Are they giving the sum between L and R? Yes, but what is the GCD of them? It is not 1. Okay, it is not 1. Let's try to take 2 and 15. Sum 17 है but GCD 1 है क्या? हाँ, मतलब GCD 1 हो गया, which is not allowed. 3 and 14 GCD 1 हो गया, not allowed. 4 and 13 GCD is still 1, not allowed. 5 and 12 GCD is still 1, not allowed. 6 and 11 GCD is still 1, not allowed. 7 and 10 GCD is still 1, not allowed. 8 and 9 GCD is still 1 and not allowed, and 9 and 8 again the numbers will be repeated. So in case of prime number you will get a answer as -1. Otherwise just take one divisor and the remaining number like 15 minus 3 12. So yeah, pretty simple stuff. There are a few other cases as well. Maybe let's take L equal to 1 and L equal to 4. Sorry, 3. So you will say, sorry, R equal to 3. You will say, hey, R is odd. So we will take R minus 1, which is equal to 2. And then we will take 2 by 2 and another number as 2 by 2 as well, which is 1 comma 1. But again, 1 comma 1 will give us a GCD as 1 only. So if R is less than equal to 3, you can simply say that you won't be getting an answer. Suppose R is 4 or R is anything. If R is greater than 3, you are definitely going to get an answer until and unless L R are same. And if L and R are same, then just check whether it is prime or not. So I will again show you the solution what I have coded during the contest. बहुत simple solution है, अगर कुछ ना समझे तो again you can just ask in chat box, comment box. I guess मैंने थोड़ा बड़ा कोड लिख दिया है, but हाँ, basically this condition was not required. Simply we need to check if b is less than equal to 3 हम -1 print कर देंगे. Now if a is equal to b we just need to check whether if it is prime, if a is prime then we will print -1, else we will try to find out what is the first factor and then we will print the first factor and the remaining number a minus 1, that 3 and 12 stuff. मतलब जब 15 था तो हमने किया था ना कि first factor was 3 and then 15 minus 3 which was 12. एंड देन वी आर चेकिंग अगर तो b और 2 से डिविजिबल था तो b/2 एल्स अगर डिविजिबल नहीं था तो पहले हमने b को माइनस किया, हमने l और r लिया था इंस्टेड ऑफ a एंड b बट दैट्स फाइन. हमने b को या r को एक बार माइनस किया एंड देन वी टेक b/2 मतलब बेसिकली हमने सिर्फ एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि इवन नंबर मिल जाए एंड देन हमने b/2 ले लिया. आई गेस इट इज वेरी क्लियर. अगेन ट्राई टू pause the video and think मैंने क्या बताया है. Look, the solution link is again given in the description, so go and check out the solution. We will move to the next question as of now. If you are facing any problem, feel free to put in the comment box. So let's take the D example, plus minus permutation. Okay, so I will again explain the problem. Suppose 7, 2 and 3 is given. Okay, 7, 2 and 3 is given. What is does it means? N is 7
A is 2 and B is 3. So suppose there is a permutation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What you need to do is you need to add those values of the array which indices are equal or divisible by 2. Very simple. Is this index equal to divisible by 2? Yes. The second, it is the second index. 2 is divisible by 2? Yes. So yeah, let's take a permutation actually, not just suppose a permutation is 6, 5, 4, 1, 2, 3, 7, something like this. And we will also write their indices just to remove the confusion. See, now, what is the first indices? What is the first index which is divisible by 2? It is 2. What is the value over there? 5. So we will add the answer 5. Now, what is the next element? It is 1, right? Which is the next element? It is 1. So we will add 1. Which is the next element? It is 3. Then we need to subtract those who are divisible by 3. What is divisible by 3? 3. What is the value over there? 4. So we will subtract 4. Then what is the next element which is divisible by 3? Sorry, index, it's 6. So what is the value over there? 3. So we will subtract 3. Is there anything else? No. So what will be the answer we are getting? 5 plus 1, 6. Plus 3, 9, minus 4. So it's actually 2. So we are getting an answer of 2. Similarly, for other permutation, you would get a different answer. So what you need to do is you need to find out the permutation, or you need to find out the maximum answer which you can get for any permutation. Just try all the permutations, and whatever the maximum answer you can get, you have to put that particular answer. First of all, is the question clear? If not, then replay the video and try to think on your own what I am trying to convey. Read the problem and rewatch the video. Okay, so I hope the problem is clear. Now we will move to the solution. See, ये तो बहुत क्लियर है यार कि जो 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 टू से डिविजिबल है, मतलब जो जो ए से डिविजिबल है वहां हमें मैक्सिमम नंबर रखना है, और जो जो बी से डिविजिबल है वहां पे हमें मिनिमम नंबर रखना है. ये बहुत क्लियर है, राइट? तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इंडेक्स पे लेट्स जस्ट फिल डैशेस एज ऑफ नाउ. हम क्या करेंगे, सेकेंड इंडेक्स पे पहले सबसे बड़ा एलिमेंट रख देंगे 7. देन फोर्थ एलिमेंट पे उसके बाद वाला एलिमेंट 6. देन सिक्स्थ एलिमेंट पे उसके बाद वाला एलिमेंट 5. राइट नाउ फिर हम क्या करेंगे, बी पे जो पोजीशन है उन पे हम क्या करेंगे, मिनिमम एलिमेंट डालेंगे. तो बी डिविजिबल था 1 से, देन आया 6 विच इज ऑलरेडी कवर्ड. सो व्हाट वी विल डू, ऐसे पोजीशन जहां पे ए और बी दोनों डिवाइड करते हैं, सो व्हाट विल हैपन, एक बार वही वैल्यू प्लस होगी, एक बार वही वैल्यू माइनस होगी. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एडिंग मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट ओवर देयर, क्योंकि वो वैल्यू ऐसे भी प्लस माइनस होकर जीरो ही आने वाली है. सो वी वोंट बी एडिंग द वैल्यूज ओवर देयर. सो वेरी सिंपल थिंग, simply add the maximum value at the places where it is divisible by A, and the minimum value at the places where it is divisible by B. So the question is very clear. But now you will say, okay, it's very easy, we will do it. But the problem is n is up to 10 to the power 9. So you can't actually make the array, or you can't actually take the sum. You cannot go on dividing or checking whether it is the number is divisible by A or not. So what you need to do is, could you just calculate how many values do you need to store? How many maximum values do you need to store? So here in this case, as you can see, it is 2. Why it is 2? Because since the number was 7, so 7 divided by 2 is 3. So you are actually storing 3 elements, not 2. But here, as you can see in our answer, it was just 2, because now you need to minus those elements as well, which divides both the number. So how do you calculate a number? How do you calculate? See, how do you calculate how many times A will divide, N will divide A? It will be N by A. How do you calculate how many times N divide B? It's N by B. But how do you calculate those numbers which divide, how do you calculate those numbers where N divides A and B? So do you know something? So you might say, hey, we will simply multiply them and we will check it. Well, that might be a case, but it's actually not true. Let's take the example of 2 and 4. 2 and 3, it will be fine, but in case of 2 and 4, let's see. The multiple of 2, 4 will be 2, 4, 6, 8, 10, and 12. And then 4 will be 4, 8.
12. But if you will multiply them, then you will only get answer as 8. So you are just saying कि यार 8 ही वो नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है. हमने 8 को रिमूव कर दिया. Now you are saying there is no other number which is dividing 2 and 4. But no, 4 भी वो नंबर है and 12 भी वो नंबर है. तो हमारा एक्चुअल आंसर 3 पे आ जाता. बट सिंस हमने 2 एंड 4 का मल्टीप्लीकेशन ले लिया था तो हमें वो वैल्यूज नहीं मिल रही थी. तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी बेसिकली नीड टू टेक द एलसीएम. जस्ट थिंक ऑफ इट. जब हमें कोई ऐसा नंबर निकालना है जो दोनों नंबर को डिवाइड करता हो तो डोंट वी टेक एलसीएम. जस्ट थिंक ऑफ इट. जस्ट टेंथ में जो भी पढ़ा है उसके बारे में सोचो एंड देन कम बैक. सो वही बेसिक स्टफ है यार. मतलब इफ यू वांट टू चेक वेदर हाउ मेनी नंबर्स डिवाइड एन, how many numbers are there in n which divides a and b, so you need to take the LCM of them. Now try to we will try at in this situation how many numbers, if n is 12, just suppose n is 12, so how many numbers divide a? It's 6. So we have to take the 6 number, but we have to reduce which divides both. So how many number divides both? So if we will take the LCM, it will be 4. So 12 by 4 is 3. So yeah, as we just saw that there were three numbers which were dividing both. Which were those three numbers? As you can see, 4 and 12 were the numbers which is dividing both. So we don't need to consider that particular case. So 4 and 12 हम कंसिडर नहीं करने वाले थे. तो 2, 6 और 10 वी कैन सी कि हाँ तीन एलिमेंट्स थे जो हमने डिवाइड किए थे जो हमारे आंसर से भी आ रहे थे. So this was it. Let's come back to the original question. It was 7. So what we need to do is we need to calculate हमें maximum values कितनी लेनी है. तो हम कैसे calculate करेंगे? n by a minus n by LCM of a comma b. It will give कि हमें maximum पीछे से कितने element लेने हैं. So in this particular case it will come out to 2. So we need to take the sum of 7 plus 6. Now we need to check the minimum values कि हमें minimum value minus कितनी करनी है. So similarly हमें minus कितनी करनी है वो हम कैसे निकालेंगे? n by b minus n times LCM of a comma b. हमें माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माइनस वो वैल्यूज को कर रहे हैं जो एनीवेज कैंसिल आउट होने वाली हैं क्योंकि वो दोनों से डिवाइड होती है. तो ए वाली उसको प्लस करेंगे, बी वाली उसको माइनस करेंगे. तो एनीवेज वो आंसर ये आएगा. अब n by b कितना होता है? n by b 7 by 3 is 2 and 2 minus 1 कितना हो जाता है? 2 minus 1 is 1. So there is we just need to take one value which is 1. So our answer will be 7 plus 6 minus 1. So it will be 12. So is the answer 12? Yes, it is 12. So similarly you need to do the same. ये कितनी वैल्यूज ऐड होंगी? इतनी. कितनी वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होंगी? इतनी. जो ऐड होंगी वो पीछे से होंगी. सो यू नीड टू टेक द सम फ्रॉम बिहाइंड एंड जो सब्ट्रैक्ट होगी वो आगे से होगी. तो यू नीड टू टेक द सम फ्रॉम अबव. सो सपोज इस वेरिएबल को इंक्रीमेंट बोल देते हैं एंड इस वेरिएबल को डिक्रीमेंट बोल देते हैं. सो हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट? डिक्रीमेंट इट्स वेरी सिंपल. द सम you need to take the suppose decrement की वैल्यू 5 आई होती तो you have to calculate 1 plus 2 plus 3 plus 4, right? So इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n into n plus 1 by 2. So डिक्रीमेंट के लिए तो you can simply calculate decrement into decrement plus, okay, decrement plus 1 by 2. But how will you calculate this 6 plus 7 का sum? So could we say it like this कि हम पहले 1 plus 2 plus 3 plus up to 7 का sum calculate कर लें and then we will subtract the sum of 1 and then we will subtract the sum of 1 plus 2 plus 3 plus 4, 3 plus 4 up to 5, right? Are you getting what I'm trying to say? We are just calculating the whole sum and then we are subtracting the sum up to 5, sum up to previous value of increment. So this is what we are doing. So this was again very simple. So how do we do that? It's basic math. I will show you the solution. Just you can check out there how we are going to do it. So what we have done is very simple. We have calculated the increment, then we have calculated the whole sum, then decremented the increments. So it decremented that up to 5 and उसके बाद हमने decrement calculate किया और आंसर में से decrement subtract कर दिया and that was our final answer. Basic maths अगर नहीं समझा तो just stop the video, pen paper उठाओ और try करो. That will help you better. So yeah. Okay, so the fifth and final problem which we are going to take for this uh, session is data success fan
एंड इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन देख के सही सबसे पहले जो आता है कि यार ये शायद सेगमेंट्री का क्वेश्चन होगा, बट इट्स नॉट। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट्स जस्ट टेक द एग्जांपल। टेस्ट केस बहुत बड़ी है बट ठीक है। वो क्वेश्चन में क्या बोला है, वी विल जस्ट टेक द array as of now. Now we don't need this condition anymore, so just removing it. अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन जहाँ पे जीरो है एंड सेकंड पोजीशन जहाँ पे वन है। सो यू कैन कंसिडर कि यार जहाँ जहाँ पे जीरो है ना उसके जोर को जीरो बोल देते हैं। सो दिस पोजीशन इट इज जीरो, राइट। एक स्ट्रिंग दी होगी, एक एरे दिया और एक स्ट्रिंग दी है। आपको क्या करना है, स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ जीरो है उनको अलग से रखना है और जहाँ जहाँ वन है उनको जीरो, इन सबके जोर को द क्वेश्चन माइट आस्क द जोर ऑफ दिस फोर पोजीशन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वट एवर मे बी द वन। तो ये एक टाइप की क्वेरी, दो टाइप की क्वेरीज होने वाली है, दे आर गोइंग टू बी क्वेरीज। तो सबसे पहले सेगमेंट्री दिमाग में आता है, हाँ, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ सेगमेंट्री। हम देखेंगे हाउ यू विल सॉल्व इट विदाउट सेगमेंट्री। बट सबसे पहली जो चीज है दिमाग में वो रखनी है कि ये कि व्हाट आर दे गोइंग टू आस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गोइंग टू आस्क द जोर ऑफ ऑल द जीरोस और ऑल द वन। मतलब जहां जहां पे जीरोस है उनके जोर या तो वन के, तो वो तो हम प्री कैलकुलेट करके रख सकते हो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है, जो सेकंड टाइप की क्वेरी है, ये एक्चुअली सेकंड टाइप की क्वेरी, जो फर्स्ट टाइप की क्वेरी है वो क्या बोलेगी, वो एक रेंज देगी और वो बोलेगी उस रेंज में जो वैल्यूज है उनको स्वैप कर दो। मतलब जहाँ पे जीरो है वहां पे वन रख दो और जहाँ पे वन है वहां पे जीरो रख दो। डिड यू गेट द क्वेश्चन? वेरी सिंपल। सपोज इनिशियली क्या था, इनिशियली कुछ ऐसा हमारा एरे दिखता था, स्ट्रिंग हमारी ऐसी दिखती थी 0 1 0 0 0। नाउ हमें क्या करना है, इफ एल एंड आर गिवन एज 2 and 4, तो हमें क्या करना है कि इन दोनों 2 and 4 के बीच के जो रेंज है उसमें जो वन है उनको जीरो बना देना है एंड जो वन थे उनको जीरो बना देना है एंड जो जीरो थे उनको वन बना देना है। तो नाउ ये जो जीरो हमने कैलकुलेट किया था इट विल चेंज, और जो वन कैलकुलेट किया था इट विल चेंज एज वेल, because now if you will see the zero it's just 5 2 and 1, 3 and 4 are gone. Meanwhile from here 2 is gone and 3 and 4 are added, right? तो अगर आपने ध्यान से ना मेरे इस सॉल्यूशन को सुना होगा ना, अभी मैंने जस्ट जो बोला कि यहाँ से 3 4 चला गया और 2 आ गया, और यहाँ से 2 चला गया और 3 4 आ गया, तो इसी से आपको आंसर क्लिक हो जाना चाहिए। बट स्टिल अगर क्लिक नहीं हुआ ना, तो जस्ट यू नो अ प्रॉपर्टी ऑफ जोर इज, जोर क्या करता है, if you will जोर a something like this, suppose we will take a new text box. What Zord do is, let's just increase the size a little bit, just give me a minute. Suppose आप क्या कर रहे हो, a Zord b, so it will simply give you the answer as b, means it will cancel out a। सपोज मैंने आपको क्या बोल दिया कि एक रेंज दे दी, मे बी एंटायर रेंज दे दी, और मैंने क्या बोला कि इनको स्वैप करना है। तो व्हेन यू विल स्वैप तो क्या होगा, जीरो के जोर में से 1 2 और 5 का जोर हट जाएगा एंड 3 और 4 का जोर ऐड हो जाएगा, राइट। अब जो 1 to 5 का जोर हटाना है, तो अगर मुझे ए में से ए का जोर हटाना है तो मैं उसको फिर से ए से जोर कर सकता हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा ना, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा क्या है कि सपोज अभी जो रेंज थी 2 3 4, ये तीन एलिमेंट्स की रेंज थी, राइट। इनका जो जोर आएगा वो ये होगा 2 जोर 3 जोर 4, ठीक है। अभी मान लो इनिशियली जो था केस, हम फिर से वहां जाते हैं 1 0 and 0। तो जो वन था, अब मैं जो वन था वो कैसा दिखता था वो देखते हैं। वन कैसे दिखता था, वन दिखता था जस्ट टू, वन में जस्ट टू था। अगर मैंने इस पूरे रेंज के जोर से इसका जोर को कैलकुलेट जोर से जोर कर दिया, तो मतलब बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट उस पूरे रेंज का जो जोर की वैल्यू थी उस वैल्यू को मैंने वन के जोर से जोर निकाल दिया, तो फिर क्या आएगा ध्यान से देखो। तब मेरे पास क्या आ रहा है, 2 और 2 का जोर कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट विल बी रिमेनिंग इज 3 and 4 का जोर। क्या हमें यही चाहिए था कि 3 और 4 जहाँ पे इनिशियली जीरो थे वहां पे टू आ जाए, वन आ जाए, और जहाँ पे टू था वहां पे जीरो आ जाए। देखते हैं टू के साथ ऐसा हुआ क्या, टू में क्या था, सॉरी जीरो के साथ ऐसा हुआ क्या, जीरो में क्या था,
जीरो में वन का जोर था, जीरो में वन का जोर था, थ्री का जोर था, फोर का जोर था एंड फाइव का जोर था। अब हमने क्या किया, इस रेंज के जोर से उसके जोर को इवेल्युएट कर लिया। तो जब हमने इवेल्युएट किया तो क्या हुआ, हमने इसके आगे इसके जोर, इस जोर वैल्यू के आगे क्या किया, पूरे रेंज का जोर ऐड कर दिया। तो इट विल बी टू जोर थ्री जोर फोर, राइट। आई थिंक आउट ऑफ द स्क्रीन जा रहा है, बट यू कैन सी कि थ्री, फोर और फोर का जोर कैंसल आउट हो जाएगा, राइट, एज वी नो जोर कैंसल्स आउट। एंड सिमिलरली थ्री और थ्री का जोर भी कैंसल आउट हो जाएगा। सो बेसिकली व्हाट यू गेट इज वन, फाइव एंड टू। क्या हमें यही चाहिए था कि वन, टू एंड फाइव पे मिल जाएगा? बेसिकली हमें क्या करना है, हमने जीरो और वन को प्री कैलकुलेट, हम हर बार क्या करेंगे, जिस रेंज का वो मांगेंगे उस रेंज में इंस्टेड ऑफ स्वैपिंग हम क्या करेंगे, उस रेंज के जोर से उस जीरो के जोर को ऐड कर देंगे एंड सिमिलरली वन के जोर को जोर कर देंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि जीरो के जोर में जब हम पूरे रेंज का करेंगे तो जितने जीरो रहेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जितने वन रहेंगे वो ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली वन के जोर में जब हम लोग पूरी रेंज का करेंगे तो जितने वन वाले थे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जितने जीरो वाले रहेंगे वो ऐड हो जाएंगे। एक बहुत सिंपल सी सॉल्व सी ट्रिक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को जरा ट्राई करो देखने का। सिंपली थोड़ा ड्राई रन करके देखो, शायद कुछ आइडिया लगे। पर बेसिक फंडा यही है यार कि जीरो के जोर में हमने अगर इस रेंज के जोर को पूरे का जोर निकाल दिया, जितने जीरो वाले थे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और वन वाले जीरो वाले में ऐड हो जाएंगे। और सिमिलरली वन वाले केस में क्या होगा, जो वन वाले रहेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जीरो वाले ऐड हो जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। और हाउ डू वी कैलकुलेट द, हाउ हम जोर कैसे रखेंगे पूरे रेंज का? तो सिंपल सा फंडा, प्रीफिक्स जोर। So if you don't know about prefix XOR, तो अब यार it is a E problem, so you I expect you should know about the prefix XOR. I hope solution समझ में आया होगा। बहुत easy problem था ये। I don't know how it is the fifth problem, but yeah, let's try to look at the solution of it. Uh, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका। अगेन प्रीफिक्स और जस्ट हमने कैलकुलेट किया है एंड जस्ट सो यहाँ तक तो बेसिक स्ट्रिंग वगैरह इनपुट लिए प्रीफिक्स और कैलकुलेट किया, विच इज अगेन वेरी कॉमन थिंग। हाउ डू वी कैलकुलेट प्रीफिक्स और साथ में हमने जीरो और वन को भी प्री कैलकुलेट करके रख लिया है, जीरो और वन के जोर को। नाउ फॉर ईच क्वेरी वी आर चेकिंग, अगर वो टाइप टू की क्वेरी है तब तो उसने अगर जीरो वन फिल कर दो। बट अगर वो टाइप वन की क्वेरी है तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो रेंज वन बेस इंडेक्सिंग पे थी तो उसे हमने जीरो बेस इंडेक्सिंग बनाया। वेरी सिंपल। देन वी चेकड आउट की रेंज का जोर क्या है, तो रेंज का जोर निकालने के लिए बेसिक प्रीफिक्स और टेक्निक, इसमें भी मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है। एंड देन हमने वन के जोर को पूरे रेंज के साथ जोर कर दिया एंड जीरो के जोर को भी पूरे रेंज के साथ जोर कर दिया एंड वी गेट अवर आंसर। सो या प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। I hope आपको you would have understood the problem. If still you have not understood the problem, तो again comment box open है, just put down in the comments. So yeah, let's wrap up for today's guys. This was the first five problems of the code forces round 895. Hope you would have understood all the problems. If not, तो again comment box open है, वहाँ पे comment कर सकते हो. We will check into the next video. And also the code forces series is going on. So if you are not following till now, go and follow it right now. So see you in the next one. Bye bye. So see you in the next one. Bye bye. Peace out.